hello everyone, welcome to Holiday Fooodies kitchen. Let's make burnt chili garlic noodle, one of my favorite noodle recipe में से एक है। थोड़ा सा बिल्कुल स्मोकी, बिल्कुल आपको उसका आएगा गार्लिक का, कभी आपको चिली का, तीखा रहता है, बहुत मज़ेदार है। सीरियसली बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ नहीं। चलो अब देखते हैं। Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. These confessions of dejection and despair, when some great rapture is lingering in the air, I feel like jumping in your blanket. I feel like climbing in your cave. Your flesh attracts me like a magnet. Your cunning traps me like a cage. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. Feel like I'm going over the falls. इस रेसिपी में देखो सब कुछ आसान था, सिर्फ एक दो चीज़ और एलिमेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिससे और ज़्यादा ये रेस्टोरेंट में जैसे आप सोचते हो ना कि मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ और सेम फ्लेवर क्यों नहीं आता है, उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। देखो रेस्टोरेंट्स में जनरली क्या होता है ना कि जब वो जो फ्लेम आती है ना
तो वो वॉक में फ्लेम पूरा आ जाता है, जिसके कारण उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। घर में इतनी तेज़ आप फ्लेम नहीं यूज़ कर सकते हो और ना तो होती भी नहीं है, ठीक है। तो हल्का सा तो थोड़ा आपको अंतर समझ में आएगा, बट रेसिपी अगर आप एज अ टिज़ आप फॉलो करेंगे, बहुत कुछ सिमिलर आपको रेस्टोरेंट टाइप को आपको मिल ही जाएगा स्वाद। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, सब्जियां अपने हिसाब से करो। मैंने जो किया है इसमें से जो जो आपको मिले आप वो कर लो। आप इसमें चिकन डाल सकते हो, इसमें आप प्रॉन्स डाल सकते हो, इसमें आप पनीर भी ऐड ऑन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर और ज़्यादा चाहिए, अलग से गार्लिक को हल्का सा फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आते तक, और फिर उसके बाद उसको ठंडा कर लेना, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। लास्ट में एज अ गार्निश भी डाल सकते हो या फिर बीच में भी और ऐड ऑन कर सकते हो, और ज़्यादा गार्लिक का फ्लेवर और अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। मर्ज़ी आपकी है, बस एक काम करना, जलाना नहीं। जब आप मिर्ची डालो थोड़ा सा ध्यान रखना, कटिंग पहले से करके रखना, क्योंकि कोई भी चाइनीज़ का अगर काम है ना, उसमें कटिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कटिंग से ही आपका डिफ़ाइन हो जाता है कि आपको बनाना क्या है। कटिंग इसलिए मैंने पहले से करके रखी थी। और हमेशा जब भी नूडल्स के लिए आप कटिंग करो या चाइनीज़ के लिए कटिंग करो, कट करके ना थोड़ा देर आप उसको हवा लगने दो। डायरेक्टली आप ये नहीं कि आप कट करो सीधे डाल, जब हवा लग जाता है तो ऊपर का सरफेस ना लॉक हो जाता है, और जब उसको हाई फ्लेम में आप टॉस करते हो ना, तो एक बाइट आती है, क्रंच आता है, जो कि नूडल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक छोटी सी डिटेल थी जो कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी इस रेसिपी के थ्रू। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है, इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बिल्कुल जाओ, हर तरह बिल्कुल स्वाद फैला दो, जितने लोगों को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, रेटिंग देख के जाना। थैंक यू सो मच। That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway.